Assalamualaikum. Here is Afira Shabir, and today our topic of discussion is very important method of organic chemistry known as Rosenmund reduction, or simply we can say Rosenmund method. In this video lecture we have to cover following points. Number 1, what is meant by Rosenmund reduction? Number 2, what are the conditions necessary for this reaction to take place? Number 3, mechanism of reaction. Number 4, what are the applications? And last one are the limitations. As the name of the reaction indicates that it was named after the scientist Carl Wilhelm Rosenmund, who reported it in 1918. And by the term reduction, we simply means that there may be addition of hydrogen, removal of oxygen, or gain of electron. And here we will discuss addition of hydrogen because it is a hydrogenation process. And now come to the definition. It is actually the conversion of acid chloride into aldehyde, and as you can see, it is a partial reduction, not a complete reduction. In complete reduction, the final product must be an alcohol, but we want to prepare aldehyde, so partial reduction phenomena is applied. To carry out partial reduction, a variety of reagents are used, so let me explain one by one. First of all, we have to know what is acid chloride. It is actually the derivative of acid, and it can be represented as RC double bond OCl. And how it can be prepared? It can be obtained when acid react with SOCl2, PCl3 or PCl5. But we prefer thionyl chloride because when the acid react with thionyl chloride, then the byproducts are in gaseous state, which are SO2 and HCl. So there is no much difficulty in purification of the product. It is just an additional information for you to understand, and it is not included in the Rosenmund reduction. Moving ahead to reaction conditions, as it is a reduction process, so we must need a hydrogen source, and we obtain this hydrogen from molecular hydrogen, not from nascent hydrogen. And there is a strong covalent bond between two small hydrogen atoms, and the bond dissociation energy is very high, which is 436 kilojoule per mole, and it can't be broken down at room temperature. When we apply very high temperature, then there may be decomposition of the organic compound and reaction would not be feasible. So there must be an alternative source for the reaction to proceed. Therefore we use palladium as a catalyst, और palladium catalyst की surface के ऊपर हाइड्रोजन की adsorption होगी. जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हम 110 से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे. Then desorption takes place and we get hydrogen. As you can see in the image, what happened in the presence of palladium catalyst. In the first step, acid chloride is converted into the aldehyde, and then aldehyde further converted into the alcohol. But we want to obtain aldehyde, not alcohol, so reaction must be stopped at aldehyde stage. Therefore we use barium sulfate, and barium sulfate is used as a support that allows the products to escape from the catalyst more rapidly and prevent further reduction. Sulfur or quinoline can also be used, which act as poison catalyst. And what do we mean by poison catalyst? That reduces the effectiveness of a catalyst in a chemical reaction. असल में होता क्या है कि जो हमारे पास सल्फर है वो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है इरिवर्सिबली, तो इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसको लेस सरफेस एरिया मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो हमारे पास लिमिटेड हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होती है, दैट लीड्स टू द पार्शियल रिडक्शन. In addition, boiling xylene is used, which acts as solvent. And why there is need to use xylene? Because the reagents which we have, such as acid chloride, is in the liquid form, H2 is in gaseous state, and palladium is in solid state. इसलिए हमारे पास तीनों states हैं, इनको हमने एक जगह पे इकट्ठा रखना है, तो हमारे पास ना बहुत अच्छा सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिक्वायर होता है, which is xylene, और इसको हम बॉयल करते हैं at temperature 110 to 140 डिग्री सेल्सियस. As we are well aware of the reaction conditions, now come toward the chemical reaction. What happened? Acid chloride react with hydrogen in the presence of catalyst poison, and in the presence of solvent at temperature 110 to 140 degrees Celsius, resulting in the formation of the aldehyde. And if we use only palladium, then further reaction proceed and there may be formation of alcohol. तो हमने इतने ज़्यादा reagents क्यों यूज़ किए हैं? सिर्फ
पार्शियल रिडक्शन के लिए। एंड दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस बिकॉज इसमें हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और लीसिस मतलब CCl बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और CH बॉन्ड जो है वो हमारे पास बन रहा है। Moving on to the reaction mechanism, we can see that what actually happens. There are different mechanisms proposed by different scientists, so we will discuss one by one. And look at this mechanism. In this, firstly, hydrogen is getting absorbed on the catalytic surface, and then acid chloride जो कि हमारे पास benzoyl chloride है, वो इस catalyst के साथ interact करेगा और हमारे पास इसके ऊपर जो है वो absorb हो जाएगा। उसके बाद H और Cl कंबाइन होंगे और HCl बनाएंगे और यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन अभी तक जो है वो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बना है वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कैटलिस्ट रिलीज हो जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। Let's start another mechanism and first step is oxidative addition। तो सबसे पहले हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है ये हमारे पास प्लाडियम के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, और प्लाडियम के साथ ना हमारे पास दो लिगेंड अटैच है, और लिगेंड क्या है, बेरियम सल्फेट अटैच है। तो वो हमारे पास क्या होगा कि प्लाडियम इज़ गेटिंग इंसर्टेड बिटवीन द कार्बन Cl बॉन्ड, और हमारे पास ये लिगेंड्स और जो प्लाडियम है ना उसके अंदर हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इज लिगेंड एक्सचेंज। अब ये जो हमारे पास लिगेंड्स हैं बेरियम सल्फेट, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ना एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्लाडियम के ऊपर हाइड्रोजन भी तो एब्जॉर्ब है ना, उसके साथ ये हमारे पास एक्सचेंज हो गए। एंड थर्ड स्टेप इज रिडक्टिव एलिमिनेशन, कि इसमें हमारे पास H और Cl मिलेंगे और हमारे पास HCl बना देंगे। प्लाडियम जो है वो हमारे पास दोबारा से रिजनरेट हो जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। नाउ कम टू अवर थर्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब है। जब एसिड क्लोराइड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम 4MCT भी कहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन ने ना हमारे पास एक ही बॉन्ड बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चले जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन के पास हमारे पास होता है लोन पेयर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड, और जब वो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसने क्या करना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा कि 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसने एक बॉन्ड को जो है वो ब्रेक करना है, ये CCl बॉन्ड को ब्रेक करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ना हमारे पास 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसने क्या करना है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, तो ये क्या करेगा OH बॉन्ड, जो OH सिग्मा बॉन्ड है ये हमारे पास वहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगा, जिसके नतीजे में हमारे पास H+ जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो जो हमारे पास Cl नेगेटिव और H+ जो हैं वो रिलीज़ हुए थे वो आपस में कंबाइन होकर HCl बना देंगे, दैट इज़ दी साइड प्रोडक्ट। What are the applications of the Rosenmund reduction? It is used for the preparation of aldehyde, maybe aliphatic or aromatic. Now we can see how aliphatic aldehydes are prepared, and same reaction conditions in the presence of hydrogen. Ethanoyl chloride is converted into the ethanol, propanoyl chloride is converted into the propanol, and butanoyl chloride is converted into the butanol. और इसी तरह जो है वो हम फर्दर जो है वो कन्वर्जन भी कर लेंगे। Now come toward the preparation of the aromatic aldehyde. As you can see that benzoyl chloride is converted into the benzaldehyde in the specific conditions, and similarly अगर हमारे पास benzoyl chloride में बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो substituent अटैच हैं तो फिर भी जो है वो हमारे पास इसकी कन्वर्जन जो है वो aldehyde के अंदर हो जाती है। Let's see what are the limitations of the Rosenmund reduction. A lot of aromatic and aliphatic aldehydes can be prepared by this method except formaldehyde. Formaldehyde cannot be prepared by this method. If you prepare it from formyl chloride, then formyl chloride is very unstable at room temperature and quickly dissociate into HCl and CO.
Simply we can say that at room temperature it is not in the form of formyl chloride, but it is actually the mixture of HCl and CO, as it's not available at room temperature, so we can't prepare formaldehyde by Rosenmund reduction. This is all about today's lecture. Further questions will be discussed in the comment box.